Good morning, students. In previous lecture, we have completed chapter number 15. Now our new chapter is three-dimensional geometry, chapter number 12. You are studying 11th, 10th standard, two-dimensional geometry, means x-axis and y-axis. Now, in 11 and 12, we have studied three-dimensional geometry. Now consider it is origin O. It is x-axis, it is y-axis, and it is z-axis. See, x-axis, y-axis, and z-axis. Now this distance is x, this distance is y, and this distance is z. Now on the x-axis, suppose this point is A. On y-axis, this point is B, and z-axis, this point is C. So coordinates of A is x, 0, 0. Coordinates of B, 0, y, 0. It is 0, 0, z. Because this distance is z, this distance is y, and this one is x. Now A point, it is C point, it is B point. Opposite point of C, it is C dash. It is a xy plane. See, x-axis and y-axis. Then this is a floor, like floor. It is xy plane. What are the coordinates of C dash? X, y, and 0. Because C dash lies on the floor, so no z component is there. Same way, opposite point of A, it is A dash. A dash is 0, y, z. Because on A dash, y component is y, z component is z, but in this plane, this vertical plane, no x component exists. And opposite side of B, this point, consider it is B dash. So in this plane, side plane, x component is x, y component is 0, and z component is z. And one point is P. It is P. P is in the space only. Actually, ये पूरा क्यूब स्पेस में ही है, लेकिन P is in the space. Its x component is x, y component is y, and z component is z. And it is origin 0, 0, 0. See the figure of three-dimensional. O is origin, OA is x distance, OB is y distance, and OC is z distance.
Now C dash point is on the floor. C dash point, the x component is x, y component is y, and z component is z. 0. A dash is in the vertical plane, yz plane. A dash point lies in the yz plane. A dash point, this C dash point is in the floor. A dash point is in the yz plane. Its y component is y, z component is z. Same way, it is xz plane. Only P point lies in the space only. Now it is origin. So this one is origin. So it is a positive direction of y-axis. It is a negative direction of y-axis. It is x-axis, positive x and negative x. Positive z and negative z. So see the figure. Now exercise 12.1. Now question number 1. One point is on x-axis. Point lies on the x-axis. So y and z, both components are 0. So question number 1, read in your textbook. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, पॉइंट एक्स एक्सिस पे अगर कोई जगह पे है तो इसका एक्स कंपोनेंट तो एक्स, बट वाई एंड जेड कंपोनेंट इज 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट लाइज ऑन वाई जेड प्लेन. If point lies on yz plane, what is the meaning of yz plane? So y-axis and z-axis, these two axes conform a yz plane, means this plane, vertical plane. So on yz plane, elements is 0, y, z. What about the x component? The x component is 0. Question number 3. Now given points are there. This point lies in which octane? So first point is 1, 2, 3. तो 1, 2, 3 इसका मतलब ये होता है कि x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव. x, y, z are positive. So it is O, x, y, z. 1, 2, 3 like point P. X positive, Y positive, Z positive. So point P lies in O, X, Y, Z octane. Second is 4 minus 2 and 3. See the question number 2. 4 minus 2 and 3. So ये रहेगा O. Origin is common for any point. X component positive, x, y component negative, y dash and z component positive. अगर y positive इस तरफ, it is called y. So opposite direction of y is called y dash. It is z, so downward is z dash. It is x, so it is x dash. Negative direction is shown by dash. Third is 4 minus 2 minus 5. So O, x positive, y negative, z negative. So which plane is there? So O, x, y dash. O, x, y dash, z dash. Means O, x positive, y negative इस तरफ और z negative इस तरफ.
तो y नेगेटिव इस तरफ और z नेगेटिव डाउनवर्ड। अगर नेगेटिव पॉइंट आ गया तो आपको ये करना है। सपोज -4 to 5, तो O इसका x कंपोनेंट नेगेटिव, x डैश, y कंपोनेंट पॉजिटिव एंड z कंपोनेंट पॉजिटिव। O x y z dash. So there are 8 questions in this question number 3, 8 option. तो 4 मैंने करवाए, 4 आप खुद कर सकते हो। Now question number 4. X axis and y axis. In which plane exists? So question number 4, इसका first one is x axis and y axis makes xy plane. X axis and y axis makes xy plane. Second, all the points lies in xy plane is in which form? So all the points lies in the xy plane are in the form of x, y, 0. Now, coordinate planes. Coordinate planes divide space in 8 division. Coordinate plane. कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब ये फ्लोर, ये वर्टिकल प्लेन, ये साइड प्लेन। इसकी वजह से हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन द स्पेस, कितने, ये सपोज ये एक रूम है तो ऐसे कितने रूम बन सकते हैं, तो ऐसे 8 रूम बन सकते हैं। अब ये एक दिख रहा है, बाद में उसकी बाजू वाला, इसके उसके बाजू वाला यहाँ पे, और इस तरफ 4 ऊपर और 4 नीचे, ये आप एज्यूम कर सकते हो। तो यह है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे 12.1 इज ओवर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द स्पेस। अगर स्पेस में 2 पॉइंट दिए हुए तो उसके बीच कितना डिस्टेंस होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो सपोज A is x1, y1 and z1 and B is x2, y2 and z2 are in space. Space is denoted by r cube. Space is denoted by r cube. So A point is in the space and B point is in the space. It is B x2, y2, z2 and it is A x1, y1 and z1. So distance between AB
is equal to x1 minus x2 square, y1 minus y2 the whole square, plus z1 minus z2 the whole square and its root. This type of distance formula you are studying in standard 10th also in two-dimensional geometry. Difference of x component the whole square, difference of y component the whole square and difference of z component the whole square. तो यहाँ पे 12.1 ओवर हो गई। तो फिर से नया चैप्टर स्टार्ट किया है आज हमने। तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ये पूरा स्पेस, एक्चुअली स्पेस उसको हम प्लेन में दिखाना बहुत हार्ड है। तो मैंने क्या किया, ओरिजिन यहाँ से यहाँ एक्स एक्सिस, it is y axis and it is z axis. Now there are 3 points lies on the axis. X axis पे point A, y axis पे point B and z axis पे point C. अगर ये डिस्टेंस को x लिया जाए तो x 0 0. If this distance is considered as y, so it is 0 y 0. This distance is considered as z, so it is 0 0 z. Now what about this point C dash? This point is x comma y comma 0 because C dash lies in the floor, means xy plane. Yeah, x axis or y axis, it is called xy plane. A dash lies in the yz plane. And so A dash lies in the yz plane. So on the yz plane, y component is y, z component is z, but its x component is 0. And B dash lies in the xz plane. B dash lies in the xz plane. So x component x, y component 0, z component z. Only P point lies in the space whose x component, y component and z components are x, y, z. तो ये 3 डायमेंशनल की फिगर आ गई। ऐसे कितनी फिगर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये y पॉजिटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, z पॉजिटिव, z नेगेटिव। तो 4 फिगर इन द अपर पार्ट एंड 4 इन द लोअर पार्ट। तो 8 डिवीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1, अगर पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस इज y एंड z कंपोनेंट इज 0, पॉइंट लाइज ऑन yz प्लेन, point lies on yz plane, तो x component is 0. इसमें ये yz plane का मतलब ये plane, yz plane. This point lies in the yz plane. Now these points are given. अगर कोई point दिया हुआ है, those points lies in which octane, means कौन से डिवीजन में, तो ये तीनों पॉजिटिव है, तो o x y z। इसमें y नेगेटिव है तो o तो कॉमन ओरिजिन, x पॉजिटिव तो x, y नेगेटिव तो y डैश, z पॉजिटिव तो z। इसमें y एंड z बोथ आर नेगेटिव तो o x y डैश z डैश। सेम वे o x डैश y z। अगर नेगेटिव कंपोनेंट आया तो डैश पे चला जाएगा। And last question 4 is x axis and y axis makes xy plane. First question is x axis और y axis ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, तो x axis and y axis makes xy plane. Second question is all the points lies in the xy plane.
जितने भी पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन हुआ लाइक फ्लोर, तो ये यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट का स्ट्रक्चर होगा एक्स वाई जीरो, एक्स कंपोनेंट कोई आएगा, वाई कंपोनेंट कोई आएगा, बट जेड कंपोनेंट इज जीरो, तो ई इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जीरो. Question number 3 of third part of question 4. Coordinate plane का मतलब होता है xy plane, yz plane and zx plane. Divide space in how many division? कितने डिवीजन में डिवाइड करेगा? तो 8 डिवीजन में डिवाइड करेगा. And next topic of this chapter is distance between two points. दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना? So suppose ax1, y1, z1, three coordinates are there in three-dimensional geometry. x1, y1, z1, bx2, y2, z2 are in R cube. So A point is here and B point is here. A and B 2 points are given. How to find distance between AB? So x1 minus x2 the whole square, y1 minus y2 the whole square, and z1 minus z2 the whole square. You can take reverse also, x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square, or z2 minus z1 the whole square. You can write this point. क्योंकि बाहर तो स्क्वायर ही है, डिफरेंस ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ वाई कंपोनेंट का स्क्वायर एंड डिफरेंस ऑफ जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, उसका एडिशन एंड देन रूट. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की. और ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गई. ध्यान से देख लिया होगा आपने, समझ भी आ गई होगी इसकी. तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 12.2 एक्सरसाइज लेंगे. अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो इट इज कॉल्ड x0z फॉर्म. x कंपोनेंट आएगा, y कंपोनेंट 0, z कंपोनेंट समथिंग सेट, कोई भी होगा. डिस्टेंस फॉर्मूला देख लो. फिगर भी समझ लो एक बार. अब 12.2 में क्या होगा? A पॉइंट इज गिवन, B पॉइंट इज गिवन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB. तो ये फॉर्मूला 12.2 में यूजफुल हो गया आपके लिए.